गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। शमिंदर सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। और आइए चले आज का ये विशेष प्रसारण हम प्रारंभ करें, जिसमें एमसीक्यूज के माध्यम से प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्व के हैं और आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आज के प्रश्न सभी सेगमेंट से ये प्रश्न आएंगे और yes, let me wait for others to come because today's dear aspirants टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो टॉपिक्स हैं वो काफी महत्व के हैं, तो अपेक्षा है कि सभी लोग आ जाएं। यस मिस्टर समिंदर जी, ए लिटिल वेट, थोड़ी सी छोटी प्रतीक्षा उसको कहा जाए। और तब तक आज का दिन भारत के आर्थिक इतिहास में काफी महत्व का दिन, चूंकि 26-27 का बजट आज प्रस्तुत किया गया और 9वीं बार महिला वित्त मंत्री के द्वारा फॉर द 9th टाइम, गुड इवनिंग संदीप कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, ये बजट प्रस्तुत किया गया। काफी तीखा प्रहार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लगभग 1528 पॉइंट्स 1526 पॉइंट्स सेंसेक्स नीचे गिरा, जिसे धड़ाम कहा जाए। जबकि पिछले 2021 से लगातार ये ऊपर की ओर जा रहा था और यहाँ पे ये बिल्कुल धड़ाम से गिरा है। तो आइए चले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ colonial administration in British India, जेंटो कोड वाज रिलेटेड टू, आज तक क्लियर नहीं हुआ। क्या चीज क्लियर नहीं हुआ? सेंसेक्स क्या है? ओ माय गॉड, सेंसेक्स बहुत आसान चीज है, ओके। और ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो ये जो कंपनियां हैं डियर एस्पिरेंट्स, जो भी उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, तो वो सारी की सारी कंपनी किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होती हैं। इतना तक समझ गए? और इसके बाद अब ये समझेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, टेक फॉर एग्जांपल भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना। और उसके बाद एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो स्टॉक्स हैं डियर एस्पिरेंट्स, और जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, तो इसी स्टॉक से यह बनता है, ओके। तो कहने का मतलब कि टेक फॉर एग्जांपल एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 30 कंपनी है या 50 कंपनी है। अब उनको अगर मुनाफा होगा
तो सेंसेक्स उछलेगा, और गिरावट होगी तो लुढ़केगा। ओके, जब बढ़ोतरी होगी तो तीर ऊपर की ओर, ओके, बुल, और जब नीचे होगी, ओके, समझ गए, तो दिस इज, सो सेंसेक्स इज बेंचमार्क इंडेक्स। इतना आप समझिए क्या है सेंसेक्स? बेंचमार्क इंडेक्स, ओके, दैट ट्रैक्स इंडियाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द सेंसेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 30 लार्जेस्ट, देखिए यहां 30 लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स विद इन BSE, which ultimately measures India's economic activity and performance। तो ये आप बिल्कुल समझ गए कि सेंसेक्स क्या है। तो इसी को हम सेंसेक्स कहते हैं। यदि उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हेल्दी है तो फिर सेंसेक्स ऊपर की ओर जाएगा, और यदि उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नीचे है तो वो नीचे की ओर जाएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझना। और आपने देख लिया, समझ लिया, तो आइए चले इस प्रश्न पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया, जेंटो कोड, GENTO, जेंटो कोड, और ये क्या है, सार्थ का, ये सर मैं 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स का लिए तैयारी कर रहा हूं, क्या करूं? तैयारी तो कर रहे हैं, तो फिर करना क्या है? विजय प्राप्त करना है। ओके, और सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स, सारे ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स का आप जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लगातार 1 दिसंबर से इसी क्लास में मैं दे रहा हूं, तो उसको आप हृदयंगम करें, और क्वेश्चंस इसी से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जेंटो, GENTOO, GENTOO code was related to A, making provisions related to land revenue administration, B, imposing censorship on national press, C, defining the jurisdiction of provincial governments, or D, were early attempts to codify the laws concerning property inheritance। property inheritance, तो जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये क्या था ये आपको बताना है। सो डियर एस्पिरेंट्स, डी, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, सारथा के बी व हरे, डी इज द करेक्ट आंसर। साक्षी, वेरी गुड इवनिंग, और इसका उत्तर डी होगा। यस, यू आर करेक्ट, बट आई एम स्ट्रगलिंग टू प्रोनाउंस द नेम सारथा कव्या वहरे। एम आई करेक्ट? सारथा कव्या वहरे, this is the name, this is the name written. Okay, so D is the correct answer, dear aspirants. Let me explain a little bit. So a code of Gentoo law, GENTOO, 1776, dear aspirants, and digest of Hindu law on contracts and succession, मतलब उत्तराधिकार, संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में ये कानून बनाए गए कंसर्निंग प्रॉपर्टी। इट इज ओके सर, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, माय गॉड। सो आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, सार्था का व्यवहारे, सार्था का व्यवहारे, ओके।
सार्थ व्यवहारे, और आई थिंक यू आर फ्रॉम आइदर महाराष्ट्र or I don't know. Yes, sir, I am from great. Wonderful. Okay, wonderful. So, dear aspirants, laws concerning property, inheritance, marriages, and succession. So, okay, D is the correct answer. D is the correct answer. Okay. सो आईएएस बनने का तो कुछ ना कुछ तो यहाँ लाभ मुझे मिल जाता है कि मैं इंडियंस को कहां से हैं वो भली भांति टाइटल से पकड़ लेता हूं. तो डियर एस्पिरेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू फोलियर एप्लीकेशन और फोलियर फीडिंग. अब ये क्या है? जेंटू लॉ तो आप आईएएस था. यस, आई एम एसके तिवारी, आईएएस रिटायर्ड. सो आईएएस था, बिल्कुल था. सो और यहां पे इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पाउडर्ड और पेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन लीव्स इंस्टेड ऑफ मैन्योर टू फर्टिलाइज द सॉइल. अब साक्षी इसका उत्तर देंगी अच्छे से. फोलियर फीडिंग और फोलियर एप्लीकेशन, FOLIAR. सेकेंड, एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ soil fertilization, it reduces the chances of washing away of the nutrients. Or third, it is used for biofortification of cereals. Sorry sir, now to recognize you, I saw your channel for the first time today. Okay, nothing to worry about. This is the live class every day at 7:30. This is the live class every day at 7:30, and I am speaking from Devghar. Devghar, it is one of the 12 Jyotirlingas in our country. Okay, 12 Jyotirlingas in our country. Devghar in Jharkhand. Oh, and this is the okay. You are answering B, but the answer is 2 and 3. 2 and 3, and the answer is C. Okay, A 2 only, B 1 3, C 2 3, and D 1 2 3. So dear aspirants, as compared to the traditional method of soil fertilization, it reduces the chances of washing away of the nutrients, and it is used for biofortification of cereals. The first statement is not correct. Why do I say? Because foliar feeding, FOLIAR. Okay, I will do better in next. Yes. You have to do your best during the upcoming this prelims examination that is going to be held on the May 24th. May 24th. So foliar feeding is a technique of feeding plants by applying liquid fertilizer directly to the leaves. समझ में आई बात? फोलियर फीडिंग क्या है? तो पौधा के पत्तियों को, ओके, इज ए टेक्निक ऑफ फीडिंग प्लांट्स बाय अप्लाइंग लिक्विड फर्टिलाइजर. ओके, जनरली सॉलिड फर्टिलाइजर दिया जाता है उनके जड़ों के पास, जस्ट नियर द रूट्स. ओके, directly to the leaves. Nutrients applied to the foliage, FOLIAGE, are generally absorbed more rapidly than when applied to the soil, because soil application of micronutrients is far less effective than foliar application. The foliar application provides a means of quickly correcting plant nutrient deficiencies when identified on the plant. So statement 1 is not correct, dear aspirants, और ये statement 1
इसलिए इनकरेक्ट है, क्योंकि ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पाउडर्ड और पेस्ट फॉर्म ऑफ green leaves instead of fertilize the soil. So this is not the correct statement, and I am hopeful, very hopeful, that you have understood the explanation. Okay, dear aspirants, it is very important to know the reason, the correct reason behind it. So after my retirement, I am doing this online classes, dear aspirants. और ये पीछे में पैनल है, टीचमेंट का पैनल है, जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स आते हैं तो उनकी मेंटरिंग ये मैं करता हूँ. सो देर इज नो फी, नो चार्ज. आई एम नॉट ए प्रोफेशनल पर्सन, तो पेंशन तो मिल ही रहा है. तो फिर बस एकमात्र, द ओनली डिजायर विथ मी इज टू ओके सी द सक्सेस. जो भी हमारे पास है उनकी सफलता हमें दिखाई पड़े, जाने. ओके, सो ओके, वेरी नाइस. सो और सभी लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. प्रेस्क्राइब इसलिए दोस्तों को बताते हैं. ओके, दे टेल देयर फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस दैट ओके देयर इज ए चैनल that is live classes, civil services academy देवघर झारखंड. Okay, live classes every day, every evening at 7:30. Okay, I am taking coaching in Maharashtra, sir. Very good. Parsuram Kumar ji, very good evening, Mr. Parsuram Kumar ji. So actually I don't believe in coaching, because this examination is one of the toughest examination, as everybody tell. But according to me, if you are continuous and if you are maintaining consistency, then this examination is not so tough. And it depends on your own confidence level, knowledge, I should say, then the time management, and the factors through which you are preparing yourself. Okay, so you should read and write more and more, because you see during mains examination you are required to sit for the 3 continuous hours. Okay, तो ये तो सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए. With reference to the postponement of various elections in India, consider the following statement. Number one, under the Representation of People's Act 1951, this act is very, very important. Okay, sir, this is going to be my very first attempt, so I thought coaching would be better. No. Okay, coaching has no play. एक बात तो समझ जाइए. Why do I say like this? Because वहां तो आपको पीडीएफ मिलेगा. You will get PDF. The same PDF, the same material, okay, will be used by so many aspirants. Okay, so this exam is an individual exam, not a common exam. So your caliber, your capability, your quality is going to be tested. So you should develop your own leadership, decision making, and whatsoever that is required. And you all know, while you are preparing for the UPSC, that is IAS examination, dear aspirants, you should know what are the requirements. Okay, and I am sure that you know very well. So coaching is, I think, without coaching, you are able to crack UPSC during your first chance. First chance, yes. So many aspirants, they do like that. So prepare well. सार्थक कुठून आहे तुम. अच्छा, सलाइन पिलाया. Yes, I can totally sense experience in your advice. Yeah, because there you are required to have the
uh, ethical, I should say, because there is a GS paper 4 in the mains examination, ethics, attitude, and aptitude. Okay, so that paper is very, very important. That is marks fetching as well. I said, where are you from, Sarthak? Yes, he is from Maharashtra. So, with reference to the postponement of various elections in India, consider the following statements, and you all know that People's Representation Act, okay, People's Representation Act 1951, the Election Commission is empowered to defer polls under extraordinary circumstances. Second, unlike the Lok Sabha, the elections of Rajya Sabha can be postponed indefinitely. Which of the statements given above, okay, is are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, and D, neither one nor two. So, dear aspirants, the election of Rajya Sabha and the Legislative Council elections can be postponed indefinitely. So, statement 2 is correct. As far as statement 1 is concerned, this is also correct because uh, the polls can be deferred under extraordinary circumstances like COVID-19. Okay, COVID-19. So both the statements are correct. Our answer should be C. हमारा उत्तर यहाँ पे C होगा. C should be the answer. Dear aspirants, who among the following were Buddhist scholars? You have to recognize the Buddhist scholars. Number one, Basu Bandhu. Basu Bandhu. Number two, Ashwa Ghosh. Number three, Ravi Kirti. Number four, Vasu Mitra. Vasu Mitra. So these are the four names, and dear aspirants, you have to recognize, you have to, okay, identify. So, dear aspirants, A 1, 2, B 1, 2, and 4, C 3, 4, and D 1, 3, and 4. So, B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. Wonderful. B is the correct answer. Sakshi 1, 2, and 4. 4 also. Basu Mitra. Okay, 1, 2, and 4. Akash is writing B. B is the correct answer. So Basu Bandhu, then Ashwaghosh, and Basu Mitra. Ravi Kirti is not there. Okay, और रवि कीर्ति के बारे में आप जानते हैं, who is Ravi Kirti. So, dear aspirants, so dear aspirants, 1, 2, and 4 is the correct. So, the eulogy of Pulkesin II was written by Ravi Kirti in the Aihole inscription, and Ravi Kirti was the follower of Jainism, not Buddhism. So Ravi Kirti को एक्सक्लूड करना है, रवि कीर्ति को एक्सक्लूड करना है. I just read Art and Culture today morning, sir. Great, wonderful. There is good book as far as art and culture is concerned, that is Nitin Singhania. So you should read that book. और सर ये यूपीएससी कैडर में बहुत गलत चेंजेज हुए हैं. अब तो कोई स्टूडेंट अगर राजस्थान से है एंड उसकी यूपीएससी 20 रैंक भी, तो उसका मणिपुर नागालैंड कैडर भी मिल सकता है. ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, कहीं भी मिले. ओके, ये तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये थोड़े ना राजस्थान और मणिपुर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है. ओके, इफ यू हैव टू ऑप्ट फॉर राजस्थान और any state, okay, then you should try for state civil services. This is all India services, so you should be mentally, physically prepared
to join anywhere, either it's a state or union territory. This is my viewpoint. Okay, you should not be choosy, you should not be selective as far as, okay, cadre does not affect if you are into serving your nation. Yes, this is correct. वंडरफुल. राजस्थान का कल्चर का मणिपुर कल्चर में कितना डिफरेंस है? ओहो, you are made for the country. Okay, Indian administrative service. This is not a particular tribal service or local service like that. Rajasthan. Okay, so don't localize yourself. Try to universalize yourself. Okay, consider the following statements with reference to Bucharest 9 recently seen in the news. Dear aspirants, this was, okay, very much in the news. Bucharest, Bucharest, Bucharest 9 recently seen in the news. We have two statements in this MCQ. It is a group of 9 countries, including the United States and Canada, formed to promote economic cooperation between the members. Dear aspirants, you may find questions coming from IR segment. So, polity and international relations, IR. So, this very specific question relates to IR, international relation. Okay. So it is a group of 9 countries, including the United States and Canada, formed to promote economic cooperation between the members. Second, all the members of Bucharest 9 are NATO members. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. So, dear aspirants, if you have gone through this very, okay, MCQ, okay, Sakshi is writing 2 only, and this is the correct answer. Sakshi, this is thumbs up for your correct answer. The second statement is correct. All the members of Bucharest 9 are NATO members. Okay, Bucharest 9 or Bucharest format is an organization founded on 4th November 2015 in Bucharest, Romania, at the initiative of President of Romania, okay, Klaus Iohannis, and the President of Poland, Andrzej Duda, during a bilateral meeting between them. Its members are Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, and Slovakia. Its formation was mainly a result of a perceived aggressive attitude from Russia following the annexation of Crimea from Ukraine and its posterior intervention in eastern Ukraine, both in 2014. All its members are the members of NATO. But since the first statement, okay, United States and Canada, these countries are not the members of Bucharest 9. So, first statement is not correct. Second statement is correct. Our answer is B. Sorry to directly ask, sir, but it is there anyway. I can get in contact with you, and this YouTube live will be enough. Oh, you may contact, and this is my WhatsApp number. So you may contact me and join the WhatsApp group. There you will find the Hindu newspaper. Okay, this is my WhatsApp number. Oh, ho, ho, ho. No, no, no. This is incorrect. I think this is incorrect. Yes. 9934739191. This is my number. Okay, this is my number, and this is WhatsApp number. So
You may find the newspaper, the magazines, Kurukshetra and Yojana, and so many good materials. And generally, what happens, I also send some topics to write essay, because you are required to write two essays having 125 marks. So altogether 250 marks. Section A, that is thematic, thematic essay, and then section B, generally concerning the hot topics like the Russia-Ukraine war, the changing scenario in world politics, then India's foreign policy, what are the issues, okay, recently developed after the Trump tariff, that is 50%, imposed on India. So you may find so many good materials there. And this is aspirants WhatsApp group. Sakshi is there, then Parsuram ji is there, Shaminder is there. So whosoever you are finding in this class, you will find there. So now, dear aspirants, so this is all about this question, and I am 100% sure that you have understood this question. Now let us move to some other questions which are equally important. And here, yes, so Sarthak, yes, Sarthak, Mr. Sarthak, you may join this WhatsApp group just to benefit yourself. And every day you will find yourself, trading to the new heights. और यहाँ पर आइए, these books deal with mysticism and symbolism of sacrifice and priestly philosophy, and are called treatise of forest. These contain transitional material between the mythology and rituals on the one hand and the philosophical speculations on the other hand. What are they? Now you have to recognize: A. Upanishada, B. Brahmanas, C. Aranyakaj, and D. Sanhitaj. So what should be the answer? Sir, privatization is need to become developed to India. Indian economy is a mixed economy. So you cannot say privatization 100%. So it is private sector as well as the public sector. Both coexist, both exist together. So that is coexisting of public sector, that is government sector, BSNL, and private sector, that is Geo. So BSNL and Geo. So both have to exist. So Indian economy is mixed economy. So you should not say that privatization is the need to become developed to India, because that way you will be leaving your original path and moving to capitalism. So our constitution, our democratic framework, this does not allow to be a capitalist country, because the very word mentioned in the preamble of our constitution, that is socialist, secular, sovereign, SQ, S, 3S, sovereign, secular, socialist, SQ, DR, democratic republic. So 100% privatization, that is not possible, and that should not be thought upon. So dear aspirants, what should be the answer here? These books deal with mysticism and symbolism of sacrifice
and priestly philosophy and are called treatise of forest. So the answer is C, Aranyakaj. The answer is C, Aranyakaj. So this question relates to art and culture, dear aspirants. Now, please concentrate. With reference to the regulation of media in India, consider the following statements. Regulation. Okay, very good. And Mr. Bhatt, just after the this class, okay, conclusion of this class, I will add your name to my WhatsApp group. Certainly, I will add your name. So whosoever wishes to join our WhatsApp group, he should tell hi on my number. That is 9934739191. This is WhatsApp group number. So, dear aspirants, number one, the Press Council of India does not have the power to review the functioning of electronic media like television and internet media. Second, screening of short films and advertisements via television requires, dear aspirants, the prior sanction of Press Council of India. So, which of the statements given above is are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, and D, neither one nor two. So, dear aspirants, the answer is one only. Okay, statement one is correct. The Press Council of India does not have the power to review the functioning of electronic media. Okay, the PCI only overviews the functioning of press media. That is, it can enforce standards upon newspapers, journals, magazines, and other forms of print media. Okay, it does not have the power to review the functioning of electronic media like radio, television, and internet. So, dear aspirants, uh, the first statement is correct, but the second statement is not correct. Okay, the second statement is not correct. Let us move to the next question, and here we have history. Alauddin Khalji, this is medieval Indian history. You all know, okay, the history after 712 AD. 712 AD. That is the advent of Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim, he attacked Sindh, and during that period, the king of Sindh was Dahir. So, dear aspirants, then after you see okay, series of attacks, series of invasions by the Muslims. Okay, and they were Muslim intruders, terrorists, I should say, Ghazni, Gori. They were the looters. Okay, and they did not contribute, but they looted the very wealth of our country, and they demolished the religious टेम्पल्स ऑफ आवर कंट्री. सर, अभी चाइना में एक ब्यूरोक्रेट को करप्शन करने पर फांसी हो गई. इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए सर. हमारे तो जेडीए का कमिश्नर डेली 2-3 करोड़ कमा रहे हैं. माइनिंग में एमएलए एसडीएम मिलकर पैसा कमा रहे हैं. नादिर शाह एंड अब्दाली एल्सो. सो नादिर शाह, अब्दाली, यस, वो okay. So they were the intruders, Afghan. They were not basically Indians. Okay. So they were outsiders and they attacked. So primarily they looted the wealth. And what happened after the Battle of Tarain? The Battle of Tarain, the first battle that took place in the year 1191, Prithviraj Chauhan became victorious. But in the second battle of Tarain, in the year 1192, Prithviraj Chauhan was defeated. Okay, and just after, you see, 14 years, in 1206, 1206, that is
1206, you will find the dynasty that is known as slave dynasty. Kutubuddin Aibak became Sultan of India. Okay, Sultan of India. And thereafter, from 1206 to 1526, 1526, okay, there were five dynasties: slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. In the year 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat, and thereafter you see the Mughal dynasty. Bhaj Shah, B for Babur, H for Humayun, okay, A for Akbar, J for Jahangir, S for Shah Jahan, and A for Aurangzeb. Bhaj Shah, dear aspirants. In 1707, Aurangzeb died, and you find in 1757, the East India Company, okay, fought the battle of Palasi against the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah. Sirajuddaulah was defeated and killed. Thereafter, you see Mir Jafar as Nawab, but he was mere puppet in the hands of the East India Company. Dear aspirants, so this question relates to medieval Indian history. And after the Europeans, the advent of European powers in India, okay, modern period starts. Modern period starts. So that is at the 18th century. 18th century, you may say, the modern Indian history. So right from the 13th century, okay, to the 18th century, it's medieval Indian history. Okay, so Mr. Pankaj is of the opinion. So, but the ED and other investigating agencies are there. Okay, so whosoever commits corruption, he has to face the music, according to me. Okay, a day or two, he may hide himself or herself, but that day is not far away when the law of land, okay, will put him or her to task. So nothing to worry about. Don't be pessimistic and don't think about the extreme things. China is a communist country. Okay, China is a communist country. They have got their own norms. Democracy is not there. Elections, okay, are not held in China. We are a democratic country and the largest democracy on this planet Earth. Okay, the largest democracy on this planet Earth. So we are very much legitimate. We are very much liberal. We are very much according to the situation, whatsoever our country demands. So there is unity in diversity. Okay, so we have to take care of the all corners of our country. Dear aspirants, इसलिए फांसी की सजा करप्शन में बिना जांच के, वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल जुडिशियरी, तो फिर कैसे फांसी की सजा? और अगर कोई कानून है तो देखें, ओके, अलाउद्दीन खिलजी's market reforms were regarded as the great wonders of his age. Which of the following was not the most convincing reason to initiate them? A. Alauddin had to maintain a large army due to the permanent Mongol threat, due to which he had to make an effective price control policy. B. To maintain large army, continued supply of food grains was required so that they could be paid in kind. C. For the welfare of the people so as to enjoy their continuous support.
and D, to overcome the problem of food grains scarcity due to frequent expeditions. So what should be the answer to this MCQ? Dear aspirants, if you have, okay, listened well, you are able to answer this question, dear aspirants. So, okay, what should be the answer? The answer is B. To maintain large army, continued supply of food grains was required so that they could be paid in kind. So this is the answer. This is the answer. B is the answer. आइए चले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. The term office of profit is neither defined in the Constitution of India nor in the Representation of People Act 1951. लाभ का पद. Second, the question of disqualification of members of parliament on the grounds of office of profit is decided by the presiding officer. Who presides the proceeding of the Lok Sabha? Of course, the speaker. Third, the office of chairperson of National Commission for the Scheduled Caste is exempted from disqualification on the grounds of office of profit. So, dear aspirants, which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 3, C 1 3 and D 1 2 only. तब अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट क्या है. सो डियर एस्पिरेंट्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नाइदर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर in the Representation of People's Act 1951. And the third statement, the office of chairperson of National Commission for the Scheduled Caste is exempted from disqualification on the grounds of office of profit. So the third statement is also correct. Second statement is not correct. Our answer should be C, 1 and 3. Our answer should be C, 1 and 3. Dear aspirants, now let us move to the next question. Which of the following phenomenon would not have taken place in the earth where if the earth were not tilted on its axis? यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती. ओके, झुकाव 66 and half, 23 and half. तो दूसरा क्या बचा? 66 and half. Okay, adding 66 and half to 23 and half, it comes 90 degree, right angle. So, dear aspirants, which of the following phenomenon would not have taken place? ये नहीं होता. क्या नहीं होता यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं रहती? नंबर 1, varying length of days and nights throughout the year. Second, changes in the altitude of the midday sun at a given location. Or third, phenomenon of day and night at different times in different places. Select the correct answer using the code given below. A 1 2 only, B 2 3 only, C 1 3 only and D 1 2 3. So dear aspirants, if you are listening me, please, okay, write your answer in the chat box. Chat box में आप अपना आंसर लिखें. और समिंदर is telling D, but the answer is A, 1 and 2. Third statement is not correct. Phenomenon of day and night at different times in different places. This is not correct. Okay, varying length of days and nights throughout the year, this is correct. And changes in the altitude of midday sun at a given location, this is correct. So A is the correct answer. Ayushman Yuvraj Singh.
वंडरफुल मिस्टर आयुष्मान युवराज सिंह, ऐसा तगड़ा नाम आपने पहली बार दिखाया और बड़ा ही अच्छा लगा। इतना लंबा नाम तो शायद हिंदी में कम ही देखने को मिले। प्राचीन काल में मिलता था, लेकिन अभी तो काफी अच्छा रहा। आयुष्मान युवराज सिंह, तो युवराज सिंह वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर्स, जो भारत के क्रिकेटर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन एज वेल एज लेग स्पिनर, तो ऑलराउंडर उन्हें कहा जाए। और उसके बाद आपके नाम को सुना, आयुष्मान युवराज सिंह। सो वेल डन सर, आई एम इन 11, वंडरफुल 11, and you are thinking to prepare yourself for the UPSC exam, especially IAS. You want to become an IAS. This is great. This is great. I really appreciate. And keep it up, dear Ayushman Yuvraj Singh ji. And okay, keep the flag flying. Okay, so you please devote your quality time to your for NDA. Yes, National Defense Academy. That's great. That's great. So, dear aspirants, so 1 and 2, these are the correct answer. The third statement is not correct. So, dear aspirants, this way we have taken at least 10 important questions. Okay, exactly 10 important questions. And we will be, okay, knowing some more questions, कुछ और प्रश्नों की ओर बजट पे विस्तार से कल हम बताएंगे। ओके, जो समाचार पत्र में सब कुछ आएगा तो उस पर हम ये चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से कल हम चर्चा इस पर करेंगे डियर एस्पिरेंट्स। और उसके बाद सार्थ बोल रहे हैं ओके सर, यस ओके। तो आइए चलें कुछ और प्रश्नों की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, और Pechora missile. This is a missile, dear aspirants. Pechora, Pechora, Pechora missile that was recently seen in news is best classified as which type of air defense system? A. Surface to air missile. B. Air to air missile. C. Surface to surface missile. And D. Air to surface missile. So, what should be the answer? So, dear aspirants, Pechora missile, P-E-C-H-O, okay, R-A, P-E-C-H-O-R-A. So, this is surface to air missile. This is surface to air missile, and our answer is A. Our answer is A. So, Mr. Sarth, you will have to correct your answer. The answer is A. So, let us move to the next question. This is the NPS Swasth Pension Scheme. Okay, NPS Swasth Pension Scheme has been launched by which authority? किस प्राधिकार के द्वारा ये स्कीम योजना लागू की गई है? A. Ministry of Finance. B. Pension Fund Regulatory and Development Authority, PF. Okay, RDA, PFRDA. C. Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDA. And D. Reserve Bank of India. तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को
किसने लॉन्च किया है? डियर एस्पिरेंट्स, द आंसर इज बी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये है टेहरी लेक। टेहरी लेक, टेहरी लेक that was recently seen in news is located in which state? ये टेहरी लेक किस राज्य में अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर मिस्टर समिंदर सिंह जी, और धमाकेदार आपने आंसर दिया, धमाकेदार आपने आंसर दिया और क्विक आंसर दिया, क्विक आंसर आपने दे डाला। तो आइए देखें कुछ और क्वेश्चंस के प्रति हम और ये जो भी क्वेश्चंस हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सभी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और इसी में एक क्वेश्चन है, सी ऑफ जापान दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए मार्जिनल सी ऑफ व्हिच ओशियन? मार्जिनल सी ऑफ व्हिच ओशियन? ए पैसिफिक ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन एंड डी इंडियन ओशियन। तो आपको बताना है सी ऑफ जापान, ओके, जो हाल ही में समाचारों में था, इज ए मार्जिनल सी ऑफ व्हिच ओशियन, और समिंदर बता रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर, पैसिफिक सी इज द करेक्ट आंसर। So dear aspirants, now the next question is, the rusty spotted cat, one of the rarest and smallest wild cats in the world, was recently spotted in which state? कौन सा कैट रस्टी स्पॉटेड, RUSTY? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका एंड डी राजस्थान। अब ये रस्टी स्पॉटेड कैट कहां पे दिखाई पड़ा? द रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट्स। सो इफ यू आर नोइंग द आंसर, यू शुड राइट इट इन चैट बॉक्स डियर एस्पिरेंट्स। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका एंड डी राजस्थान। सो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, रस्टी स्पॉटेड कैट। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हिच स्पीशीज is the natural host of Nipah virus that was recently seen in the news? Nipah virus, okay, dear aspirants, यदि आप समझते हैं कि सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर झारखंड आपके सपनों को पूरा करने में सार्थक है, सहायक है, समर्थ है, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। और आइए चलें ऐसे प्रश्नों पर। व्हिच स्पीशीज, प्रजाति, इज द नेचुरल होस्ट ऑफ नीपा वायरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ए rodents, बी पिग्स, सी फ्रूट बैट्स एंड डी माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स। तो अब बताना है नीपा वायरस का नेचुरल होस्ट, और समिंदर जी अब आ गए हैं फॉर्म में, तो सबको कर रहे हैं धाराशाही। सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रूट बैट्स। सो डियर एस्पिरेंट्स, एक सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस आयुष्मान युवराज सिंह, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। सो सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, BR बायोस्फीयर रिजर्व, TR टाइगर रिजर्व, NP नेशनल पार्क, ये तो आपको जानना ही जानना है। सो सेट्टीहली, SETT, ओके, IHALLI वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु एंड डी महाराष्ट्र। सो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, और ये बिल्कुल सही आंसर है। और आंचल अग्रहरी, गुड इवनिंग डियर सर। तो वेरी गुड इवनिंग, और हाथ नहीं जोड़ना है आपको, ओके। यत्र पूज्यन्ते यत्र
नार्यन्त पूज्यन्ते देवता तत्र रमन्ते। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। तो कहने का मतलब आप हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करें, बस गुड इवनिंग, दैट इज एनफ। सो डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह के प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। अब आइए एक और प्रश्न ले लेते हैं। श्री महाकालेश्वर टेम्पल that was recently seen in news is located in which city of Madhya Pradesh? A. Bhopal, B. Ujjain, C. Indore, and D. Satna. So what should be the answer? बताइए। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये क्यों समाचारों में था? बिकॉज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, refused to hear a petition against VIP darshan at Sri Mahakaleshwar temple, saying court should not act as gatekeepers for temple entry. तो बड़ा ही फनी इसका आया। सर कुछ मैं आप ग्रेट टीचर, थैंक यू सर। ओके, सच में आप ग्रेट टीचर। अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट ए टीचर, और टीचर तो मैं कभी बन ही नहीं सकता। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं अपने को आज भी एडमिनिस्ट्रेटर ही समझता हूं। अब एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेजों के जमाने का एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम एन इंडियन, और सबको लेकर के, सबका साथ सबका विकास, सभी के लिए उपलब्ध और अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ये आपकी होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट एक्सेसिबल और कुछ ही लोगों के लिए आप एक्सेसिबल हैं, इट्स नॉट गुड। ओके, तो ऐसे लिखिए आंचल और व्हाट्सएप कीजिए हमको 9934739191। आपने कई बार मेरा व्हाट्सएप नंबर सुन लिया, तो आप ऐसे लिखिए और भेजिए। आपके लिए मेरी ओर से टॉपिक, वही टॉपिक जो आप चुन लेंगे, और एक ऐसे भेजिएगा, तो उसके बाद ग्रुप में आप ऐसे टॉपिक्स पे लिखिए, बिकॉज राइटिंग बहुत जरूरी है। ओके, जब तक से आप लिखेंगे नहीं, साक्षी ने लिखना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से लिखना शुरू कर दिया, तो ये, और साक्षी ने कहा एवरी सैटरडे हम आपको भेजेंगे। तो आज तो संडे है, तो भेजेंगी, कल भेजेंगी। निश्चित रूप से सभी को लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और ये क्रिएटिविटी है, बिकॉज यू राइट योरसेल्फ। और एग्जाम में भी तो यही क्रिएटिविटी आपको दिखाना है। तो किस प्रकार से ऐसे लिखा जाए, क्या उसका तौर तरीका हो, यूपीएससी के आंसर्स कैसे लिखे जाए, ये सारा का सारा पे टिप्स आपको हम देते रहेंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूराटॉम वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ट्रीटी? अब बताइए किस ट्रीटी से यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी की स्थापना हुई थी? और जब यूरोप की बात होती है तो सचमुच मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ भारत ने किया, अभी हाल ही में किया। 27 जनवरी को हुआ। याद करने वाली बात, 27 कंट्रीज के साथ हुआ। 27 देश, 27 जनवरी, 18 वर्षों के बाद। सो डियर एस्पिरेंट्स, 18 वर्षों के कॉन्टिन्यूअस अटेम्प्ट्स के बाद। सो ए मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992. Okay, let me tell you the answer. Treaty of Rome 1957. Treaty of Rome 1957. This is the correct answer. This is the correct answer. अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। The doomsday clock was established by which organization? ये doomsday clock किस संगठन के द्वारा स्थापित हुआ? सो द करेक्ट आंसर इज बुलेटिन ऑफ
एटॉमिक साइंटिस्ट्स, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स। सो इसका भी आंसर आपको मैंने स्वयं से बता दिया। डियर एस्पिरेंट्स, प्रत्येक दिन एक नई ऊंचाई हो, नई उड़ान हो और आप आगे की ओर बढ़ते रहें, यही आपसे हमारी शुभकामना है। एक मैसेज है वैजाद भट्ट जी का और उनको हम ग्रुप में डालेंगे। इसी तरह से आप जो भी अभ्यर्थी हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, this is the right place for you. Every day live class, for half an hour, 45 minutes or 1 hour exactly. So dear aspirants, now it's time to leave you. और आंचल, आपके लिए तो बहुत कम क्वेश्चन हो पाया बिकॉज 7:30 बजे से ये क्लास चलता है। तो आपसे गुजारिश एकमात्र कि आप वीडियो देख लेंगी और जहां पे आपको डाउट हो तो कल का क्लास तो है ही, आप अवश्य पूछ लेंगे। सो आई थिंक we should say good night to all of you. Thank you for joining me. सर पता है बस तबीयत ठीक ना होने की। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। भगवान से प्रार्थना आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप सकुशल हों और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, ये प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मौसम चेंज कर रहा है, मौसम चेंज कर रहा है। आज तो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है, तो मौसम चेंज कर रहा है, ठंडा गर्म ठंडा गर्म, तो इसी से। और कोई घबराने की बात नहीं है। इम्यूनिटी बना रहे, अपने रूटीन को ठीक करें। प्लैनेट अर्थ पे इफ यू वांट टू बिकम ए हेल्दी पर्सन, देन यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। सब पे आपका ध्यान है, किताबों पे ध्यान है, माता पिता पे ध्यान है, दोस्तों पे ध्यान है, धुरंधर फिल्म पे ध्यान है, सभी जगह ध्यान है। अपने आप पर भी ध्यान जरूरी है। ओके, एक एप्पल प्रतिदिन, मिल्क प्रतिदिन, एक्सरसाइज एवरी डे इफ यू कैन, वॉकिंग करिए, करें, इसकी कुछ भी करें, बट डू इट। ओके, और समय पे खाना पीना हो, ज्यादा रात में पढ़ना नहीं है, नींद जरूरी है, एटलीस्ट 6 to 7 hours, 7 घंटे की गाढ़ी नींद जरूरी है इस शरीर को। ये तो एक मशीन है, इसको भी तो रेस्ट चाहिए। ओके, तो इस तरह से अपने को स्वस्थ रखें, अपने पे ध्यान दें, सभी लोग, नॉट ओनली आंचल, सभी लोग, एवरीबडी, बिकॉज ये जॉब आपका फिजिकल मेंटल सबका टेस्ट है। ओके, 24/7 का जॉब है आईएएस। आपको आराम कहाँ, विश्राम कहाँ? जब आप खाली भी हैं तो यू विल हैव टू थिंक फॉर द कमिंग डे। ओके, सो थैंक यू। ओके, और आंचल ने गुड नाइट कर दिया। आप सबों को मेरी ओर से गुड नाइट, बाय बाय।